session. And first of all, we welcome Ashita. So she has been a struggler and she has been a person who was quite sure that she wants to get into NIFT. She got through NIFT in the second attempt, but with a rank of All India rank 20. So definitely it's one of the biggest achievement one can get after. So one couple of things I want to talk about Ashita is that first of all, she has taken all the classes online. All means all. She has taken everything online. Good thing, she has taken each and every class. I have not seen Ashita missing any class. I have seen Ashita अभी तो जूम हम लोग को बता देता है कि आपका 15 मिनट पहले मीटिंग है, लेकिन अशिता बताती थी कि क्लास होने वाला तो 10 मिनट पहले ही ज्वाइन कर लेती थी क्लास। क्लास 3 बजे शुरू होने वाला था, अशिता 2:50 पे ऑनलाइन होती थी। क्लास 7 बजे होने वाला होता तो अशिता 6:50 पे ऑनलाइन होती थी। तो यू वर वन पर्सन हु अटेंडेड ईच एंड एवरीथिंग from beginning till end and applied each and everything what has been asked to do, and you have given each and every examination, each and every test what we have taken. That's very important, and that's you are one of the most consistent students. So once again, congratulations. And she will be joining NIFT Delhi textile design, and she will be starting her session from 26 July. So all the best for the new beginning, Ashita. So thank you so much, sir. So Ashita has made a presentation to show all of you how consistently she has grown. So I'll be sharing the presentation, and along with the presentation, I'll share and ask the questions what I want to ask basically, Ashita. So first of all, Ashita, before starting the presentation, I want to understand a couple of things. First of all, that a lot of students think that आपने drop किया, you have taken a drop year, you have taken a drop year. So Yes. what was going in your mind? You have not done anything except the preparing for NIFT the last year. So what was going in the mind? Ups and downs तो होते होंगे, दिमाग में लगता होगा ना कि कहीं waste नहीं हो जाए, but आप consistent है. How? So to be honest, I don't think drop is anywhere you can think of it as a bad side. Honestly speaking, I think if you are very consistent and you are focused towards your goal, so taking a drop here won't matter much, because at the end of the day, if you achieve your goal, that is all worth it. All the time, effort, hard work that you've put in that 1 year will come to, will come in front of you. So I think drop में कुछ गलत नहीं है. Of course, Obviously, हाँ, obviously बात लगती है कि जब for me, when I could not do in the first attempt, I felt dejected. But it was like, I cannot stop, I cannot give up, because this is my goal, I need to achieve it. So I took another year. So it was like, I have to give it my all. what was the difference in the preparation of the first year and second year that you have just become a topper in the second year? Preparation में क्या difference हुई? So to be honest, in the first year, sir, I think I did not, to be honest, I will say I did not take things very seriously as it should have been taken. So I thought in this year, I need to double up my hard work. So I actually divided a lot of my time. Systematically, I did everything. So I gave equal time, I gave time to my CAT section, also CAT section, because sir, my drawing wasn't that good. So I had to, improve on that. So I gave a lot of time to drawing section, and I worked towards it, sir. Yes. So, so in the second year, you worked more on your drawing, because Section, yes. I have seen you growing in all the subjects. You were almost in top 2, top 3 every time we have taken any kind of examination, in GAT section also and CAT section also. So how you have divided the time? Anyways, I have seen your presentation. You have written it, that how you have divided the time. But this is how you have divided your time, right? Yes, sir. Yes, sir. So it was actually, I divided my GAT and CAT very systematic, precisely. So I had to give actually 4 hours at least to my GAT. I had to strengthen what I am good in, and I had to improve what I'm bad at. So I did English because I'm good in English. So I gave little time, and GK and history took a lot of time, because it is very vast and you have to learn a lot of things. And revision of every class was must, sir. It was must. You need to revise everything what has been taught. Every day, I mean every day. So apart from the live classes you used to take,
आप रिकॉर्डिंग भी देखते थे? So not every day, so but the topics that I could not understand maths, and if I have to revise in GK or history, yes, so I used to take it. I think in 3 times a month, maybe not more than that, because I attended almost every classes. Yeah, you have attended almost every class. Every means every. Have you missed any class? I want to ask. Have you missed any class? No, so as far as I remember, I haven't missed any class. All right. So, apart from, see how important is, like, I have seen your English, I have seen your drawing. So I want to tell everyone that Ashita has started drawing, I guess, from 10%, and you have reached to 90%. The drawing you have achieved this much of journey you have done in a good time. But I'll say that you have worked extremely hard in the second year when Yes, the yes. this year your work was extraordinary. So if someone's drawing is not good, what are the tips you want to give and how to improve it? Because I have seen your drawing that you were not an artist. You have started everything from scratch, just like anyone else. So what are the tips you want to give to the students if they are starting just like you and if they have good 7 months right now before the exam? So if you really want to improve in the CAD section, my only advice would be to pick up things that you're not good at. For example, me, I was bad at human postures, animal postures. So what I did was a to-do list. Every 10 day, I will make a list that I have to do this. Every human, female, male postures while sitting, walking, talking, I had to draw every day. And after the end of 5 days, I used to make a rough sketch of, without a background. People are talking, sitting, walking, everything like that. And even used to add few animals so that I could make a scene. And for product, I used to take anything like a mobile phone or my pencil, used to draw it. So sketch it out. How am I making it? Then used to draw it again and again till the time I feel like it's okay. So I was looking at your scores. Last year, इस time पे आपका score around 60% चल रहा था in the month of June, July. And by the time November, you were 80, 85 out on 100 and consistent. What you did in those 4 months from June to August, आप क्या किए अपने ड्राइंग को इम्प्रूव करने के लिए? क्या आप सिर्फ ड्राइंग कर रहे थे या बाकी चीजों पे साइमल्टेनियसली फोकस कर रहे थे? बिकॉज getting rank 20, it means that you were good in everything. But were you only doing drawing or doing everything else along with that? So I was devoting 70% of my time towards drawing because the drawing section is quite heavy. 50% of your mark consists of there. So 50% is like a lot. So I had to devote a lot of time to drawing. And GAT section was like I could do it. So if I lesson 1 hour here, I can add 1 hour to my drawing. So that will be I will be able to balance everything. So yes, GAT section was drawing section. I spent a lot of time there. आप आपका मेन टाइम जो आप ड्राइंग डे टाइम में करते थे या नाइट टाइम में करते थे प्रैक्टिस? So after in night time, so I think that way I was more focused there. In night I'm quite active. I suggest everyone to do drawing in the daytime only, but since because it was only thing going on your mind. आप जब निफ्ट का प्रिपरेशन कर रहे थे तो I have understood one thing while you were preparing for an IFT examination that you are going crazy for the NIFT examination and day and night you are doing the same thing. So anyways, आपका सबसे weakest area क्या था drawing में और आप उसको overcome कैसे किए? So weakest area, you know that I am not very good at making scenes. You know it very well. I'm not very good at making scenes. So what I did was practice human figures first, animal figures first. Then you used to do one animal figure, one human figure, interacting. So one person is taking the dog out for the walk. This is how I did so. Then step by step, I added the background, like the trees, buildings, the park, everything. I did it step by step. Okay. आप एलिमेंट्स आपके ड्राइंग में शुरू में एलिमेंट्स कम होते थे, एंड होते होते आफ्टर टेकिंग ऑल द फीडबैक्स फ्रॉम ऑल द एग्जामिनेशन आपके एलिमेंट्स के नंबर्स बहुत बढ़ गए थे. सो आप एलिमेंट्स के लिए अलग से प्रिपरेशन करते थे या पहले कॉम्पोजिशन करते थे और फिर उसमें एलिमेंट्स डालते थे, या फिर आपके दिमाग में पहले से एलिमेंट्स होता था कि मेरे किसी भी कॉम्पोजिशन में यही एलिमेंट्स डालने हैं?
Yes, so it depends on the question. If you give if you give us a drawing, if you give us a question like we have to make it in the house, anywhere inside the house. So obviously we need to have chairs, sofas. It was all there. I used to make a list of elements. Okay, this is something that I have to do. So I list down the elements. Then I used to make it separately and then add it. Then how is it in a thumbnail? Okay. Just beside my drawing, I used to make it like a thumbnail and So then you draw used to it in make my. thumbnail before all the drawings. Yes, sir. Yes, I used to. Okay. All right. So this is the drawing which you have done. These are human figure. Sorry, these are animals. So ये सब चीज आप प्रैक्टिस करते रहते थे और कितनी कितनी आपने तो एक शीट डाला है, ऐसे कितने सारे शीट्स आपने बनाए होंगे? So बहुत है, बहुत है. Honestly speaking, this was like last year so मेरी एक या दो drawing file भरी होंगी. इस बार I think I used 5 or 6 drawing files just to practice everything. So this is just a page. I have drawn 10, 12 pages like this. So Every day I have to practice. everyone I want to suggest that when I tell them to make a animal, they just make one animal and say that I'm done with the syllabus. I make two human figures, I'm done with the syllabus. वो क्लास में 3 human figure बनाते हैं, घर जाके कुछ नहीं करते हैं. How important and how consistent you have to be to practice again and again. अगर आपको, I mean, you are an example कि आपने एक ही चीज को कम से कम 50 बार बनाया है अपने परफेक्शन लेवल को अचीव करने के लिए. एंड आई एम श्योर अभी भी आप परफेक्शन से 10% दूरी हो गए, लेकिन आपको स्टूडेंट्स को आप क्या बताना चाहते हो कि कितनी बार प्रैक्टिस करना चाहिए एक चीज को ताकि हाथ से वो अपने आप निकलने लग जाए? So I think the time आप तब तक practice करो जब you start feel comfortable while making. So it was like till the time I practiced till the time that I was confident that I can add this animal figure to my drawing and it will not look bad. It will not look bad. So I had to practice that many times. एब्सोल्युटली. अब ये जो राइट साइड में ड्राइंग है, इसमें आपने बिना बैकग्राउंड के बनाया है, तो अगर आपने ये बना Yes, लिया है तो आप बैकग्राउंड में कुछ भी डाल सकते हो. आप स्ट्रीट yes, भी sir. डाल सकते हो, आप विलेज सीन भी डाल सकते हो. तो आपने ऐसे कितने सारे प्रैक्टिस किए थे जो कि सीन के आगे के लिए, आई मीन व्हाट आई फील अशिता, कि अगर मुझे ये 6 चीज पता है बनाना, तो मैं इसको हॉस्पिटल में भी डाल सकता हूँ, इसको विलेज सीन में भी डाल सकता हूँ, इसको. Yes, sir. आपने क्या स्ट्रैटेजी, आपने भी यही स्ट्रैटेजी फॉलो किया था, कुछ और था? No, sir, I followed the same strategy. If I can make my human figures well, then I can add my background. यस. Because I need to be very confident while making the human figures. If they look bad, the background doesn't matter much if they look that bad. All of you, I also suggest you that just try to make human figures in different postures, and definitely whatever background they are asking, you can make that, you can add that. Street scene, city scene, कुछ भी. और अशिता, I want to tell, आपके मुंह से मैं चाहता हूँ कि आप सबको बताओ कि अगर ड्राइंग अच्छी नहीं है तो ड्राइंग 5 मंथ्स में अच्छी क्या परफेक्ट हो सकती है. प्लीज टेल योरसेल्फ दैट. आपको खुद बताना पड़ेगा कि इट इज नॉट समथिंग. बच्चे होपलेस हो जाते हैं, एक एग्जाम अच्छा नहीं करते, होपलेस हो जाते हैं. आपको मैंने कभी होपलेस होते नहीं देखा. आप हमेशा 70 से 75, 75 से 78, मैंने आपका इतना स्लो इंप्रूवमेंट देखा. बट लास्ट के 3 मंथ्स में यू वर कंसिस्टेंट एट 90, राइट? आपको बताना पड़ेगा कि ड्राइंग बुरा होना इज नॉट ए प्रॉब्लम, ड्राइंग अच्छा हो सकता है आराम से. Yes, sir. I totally believe what you said. The thing is, what kept me going was okay, I've set a bar like if I've got 65 in this exam, I need to score more than 65. If I fall below 65, then that means I'm not putting much effort. I have to score above 65. So it's okay if you get 65 or you get to low score. It's okay. You need to just make sure that you don't get below that. You A lot just of improve a students lot. have, a lot means a lot of my students, I think 50% of my current batch student who are in 11th and 12th, they have a lot of problem with human figures. How can they improve human figures? If you have a problem with human figures like I had, I used to make stick figures first. If I make stick figures correctly, if I can, put them into motion. So I think I understood 30% of what I have to do. Then I used to make those block figures. Then I used to add muscle depth to it. Step I did it. So at the end of the day, it got okay. It got better from yesterday. It just became better. प्रैक्टिस करना तो बहुत जरूरी है.
कभी ऐसा हुआ है कि आपने एक सीन बनाया, आपको अच्छा नहीं लगा, तो आप उसको कितनी बार रिपीट करते थे जब तक वो परफेक्ट नहीं होता था या जब तक आप सेटिस्फाइड नहीं होते थे? सो जब तक satisfied नहीं होंगे ना, तब तक मुझे I think I cannot rest. I cannot put the work till tomorrow. I have to do it now because it feels like I'm not putting work myself to work. This is like that. I get restless. So Everyone has to get restless. One more thing, that like if you are not good in human figures, if you feel that human figure is not perfect, then work equally good in all the topics like product drawing, poster drawing, stamp drawing, because there are a lot of other things which will be coming in examination. So मेरे काफी स्टूडेंट ह्यूमन फिगर नहीं कर पाते हैं ना, तो वो गिव अप कर देते हैं, उनको लगता है कि अब उनसे कोई और टॉपिक होने वाला नहीं है. So because I have seen rest all your works like product drawing, stamp drawing, everything was almost perfect. Only human figure took some time. But आप बाकी चीजों को इक्वली टाइम देते थे, ह्यूमन फिगर पे ज्यादा देते और बाकी पे कम देते थे, या सबको इक्वल टाइम देते थे? so I think I gave a lot of time to what I was good at, but human figures took a little more time because I think I had a lot of area to improve there. So it took a lot of time. Honestly, it took a lot of time. And how important is coloring? So coloring is like if you are drawing, it gives life to your drawing. It really gives life to your drawing. So I'm not very good at coloring also, but I try to, get better at it. So this is like I used to practice a lot of drawing that like color blending, how I can blend. If then I used to take a paper and then do it. Scribble on it using a color pencil till the time I think I can understand the depth, how much volume I need to put here. So your one strong point was presentation. Your presentation was always very good. So you knew, आप एक ट्रिक समझ गए थे कि अगर प्रोडक्ट बोला गया तो प्रोडक्ट तो बनाना है, लेकिन उसके साथ का प्रेजेंटेशन, आप कैसे वर्किंग होता है, कैसे उसका पैकेजिंग है, यू यूज टू शो एवरीथिंग. So how Yes, sir. important is the presentation in product drawing? Is only product drawing what is matters, or how you have presenting it? Both matters. So if you think ये ढंग से नहीं बना है, तो हम इसको present अगर कर देंगे, तो I think the examiner who is looking at your drawing can understand it. If you put it into presentation, like you putting things near it, it makes it look more active. So a presentation is equally important also. Presentation is definitely equally important in all your drawings. What I am seeing right now also is that even if it's a 4-step drawing, you used to give equal importance to all the 4 boxes. ऐसा नहीं होता था कि 3 बॉक्स आपने बहुत अच्छे से किया, एक बॉक्स को छोड़ दिया. अगर हम ध्यान से देखेंगे तो आपके सारे ड्राइंग में एलिमेंट्स बहुत सारे होते थे. सारे ह्यूमन बीइंग के पोस्चर्स भी अलग होते थे. सारे ह्यूमन, मतलब इसमें एलिमेंट्स आर इम्पोर्टेंट. मैं सबको फिर से बोल रहा हूँ कि even if you think that your art is not getting 100 on 100, if you're working on a lot of element like Ashita, इनके ड्राइंग में भी इन्होंने ये भी समझ गई थी, इनको ट्रिक समझ आ गया था कि एलिमेंट्स आर इंपॉर्टेंट. अगर हम इसमें भी देखेंगे तो इसमें आप देखोगे तो सीसीटीवी भी दिखेगा, यहाँ पे निफ्ट भी दिख गया, गाइडलाइन भी दिख गया, यहाँ पे स्टार स्पोर्ट्स का लोगो भी दिख गया. आप यहाँ ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपको टाटा स्काई का मैसेज बॉक्स भी दिखता है, जो येलो कलर का मैसेज बॉक्स आता है, जिसमें आता है कि आपका रिचार्ज खत्म होने वाला कुछ भी. सो द पॉइंट इज दैट कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. बिल्कुल जरूरी नहीं होता है कि आप कितने अच्छे कितने सुंदर से बनाओ, लेकिन बहुत जरूरी होता है कि आपने कितना माइन्यूट ऑब्जर्वेशन किया, उसको आप अपने ड्राइंग में दिखाओ, जो अशिता के सारे ड्राइंग में अंत में होता था. और व्हाट आई हैव सीन अशिता, दैट फ्रॉम अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी, आपने जो कंसिस्टेंसी फॉलो किया है, आपके एक भी एग्जाम में आप आपको कम मार्क्स नहीं हुआ था पिछले एग्जाम से. आई डोंट थिंक सो. सारे एग्जाम्स में आप जो मार्क्स लाते थे उससे 1 नंबर ज्यादा ही लाते थे, राइट? Yes, sir. सो अगर कभी बहुत डिमोटिवेटेड फील होता है तो क्या करना चाहिए? कभी लगता है कुछ नहीं हो रहा, अगर आज ड्राइंग बन ही नहीं रहा है, एंड आई एम श्योर हुआ होगा. हाँ सर, ये होता था. दिस इज लाइक इट्स अ नेचुरल फेज होना चाहिए. But then, sir, if I look it in a wrong way, then I think I might get distracted. So what I used to do it, चलो कोई नहीं, अगर आज नहीं हुआ, so I used to sit down, but somewhere in the mind, like, क्यों नहीं हो रहा है, होता था, honestly होता था, but then I used to distract myself. Oh, it's okay, कोई नहीं, हो गया, जो होना था हो गया. Then I used to go back. फिर मैं दोबारा अपना खुद का एक रिव्यू लिखती थी, मॉम डैड से पूछती थी, मॉम डैड क्या था. फिर then next day I used to sit again
चलो ठीक है, हो गया, ये हो गया, अब मैं दोबारा से अच्छे से बनाऊंगी. Then I used to start watching something else so that I can distract myself. But then it is natural, so ये होना था. तो एक चीज था आशिता कि आपके ड्राइंग में जितने भी प्रोडक्ट बेस्ड चीज होते थे वो बहुत अच्छे होते थे. जो भी प्रोडक्ट बेस्ड चीज होते थे, क्योंकि आपको प्रोडक्ट का तो टिप्स एंड ट्रिक पता चल गया था. अगर हम इन्हीं ऊपर और नीचे के ड्राइंग को कंपेयर करेंगे तो आई कैन anyone can figure it out that your product based things are absolutely fine. और ह्यूमन फिगर में आप स्ट्रगल करते ही थे, लेकिन ह्यूमन फिगर में आप इतने प्रोडक्ट्स डाल देते थे, इतने एलिमेंट्स डाल देते थे कि ह्यूमन फिगर फिर ओवर शैडोड हो जाता था, विच इज ऑलवेज गुड. तो व्हाट यू फील कि निफ्ट एग्जामिनेशन के आपने दो एग्जाम दिए निफ्ट के, जो पहला एग्जाम का पेपर था और जो दूसरा एग्जाम का पेपर था, उन दोनों के पेपर में भी क्या क्या डिफरेंस थे क्वेश्चन में? क्या दोनों का पैटर्न सेम था, बिल्कुल अलग था? दो जो पिछले साल का 2022 और 2023 के पेपर में क्या डिफरेंस था जो आपको फील हुआ? So I think in the last paper that I gave in the product one that we had to make, I think the textile print, I think that is a product question. I could not attempt it well. I could not present it well. So I think I improved on the presentation this year and also seeing questions. So I wasn't very good at it. So what I did was before attempting it, so I drew the questions again, those three questions again, to know that what all I missed, like the lack of elements in my drawing. So I made a note of it that I have to make elements, a lot of elements. I think basic elements सबको पता होने चाहिए कि आप उसे कहीं पे भी डाल सकते हो. तो वो सारी चीजें एलिमेंट्स बनाए मैंने. And yes, so I think I don't remember the third question. I only remember these two questions, and this is what I did. The things that I did not do in the last exam, I did it in this exam. I had to make a lot of elements, a lot of observation had to be done, and presentation is a must. Presentation is a must. वही मैं आपके सारे ड्राइंग में, अगर आप लोग सब लोग देखोगे, सबके सामने ड्राइंग है, कुछ छुपा हुआ नहीं है. ये अशिता ने अभी नहीं किया, ये सारे प्रैक्टिस के टाइम किया. आप बस एलिमेंट्स काउंट करते रहो. मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप ड्राइंग देखो. ड्राइंग यकीन मानिए इससे बेटर बहुत लोग करते हैं, बट रैंक 20 नहीं लाते हैं. रैंक 20 अगर आता है तो वो टॉप रैंक है, और इसका मतलब है कि निफ्ट को और एनआईडी को एलिमेंट्स पसंद है. यू जस्ट सी एनी ऑफ हर वर्क, इट इज फुल ऑफ रियल लाइफ ऑब्जर्वेशन. करने के लिए अशिता आप क्या क्या एक्स्ट्रा करते थे अपार्ट फ्रॉम द क्वेश्चंस वी गिव? आप रियल लाइफ ऑब्जर्वेशन को इम्प्रूव करने के लिए क्या क्या फॉलो करते थे? I used to, sit down in my living rooms for improving my elements. Specifically, I used to take pictures, note कि ये सारी चीजें हैं. माइन्यूट चीजें मैं देखती थी कि हाँ यहाँ पे रखा हुआ है, इसे बनाते हैं. So I used to make those pictures, take references from the internet. कि वर्क स्पेस कैसा दिखना चाहिए सबका, and how this how every room should look like, every element. Like I used to do this like in this way. If I am, starting my table, so all those things that have been kept there, I used to make it, take picture and make it. So this is how I did. कितना अपने आप को रिलैक्स करने के लिए पार्क जाते थे, जॉगिंग करते थे, मेडिटेशन करते थे, कुछ भी ऐसा फॉलो करते थे, और आपका Yes, स्क्रीन sir. ना था? आप कितना ज्यादा टाइम फोन पे बिताते थे और कितना फोन को अवॉइड करते थे? So I think this year phone usage मेरा बहुत कम था. It was more like अब पढ़ना है. And recreational activity, I think I used to wake up at 5:30 in the morning. So 6 to 7 was my, we used to go out with my dad, play badminton play badminton, jog for a while, and then come back home. And again, 4 to 5 was like exercise time. Again, accompany my dad. Okay. So a peaceful mind is very important to अभी आजकल के स्टूडेंट्स का सबसे बड़ा प्रॉब्लम, खैर आप भी आज ही कल के स्टूडेंट हो, लेकिन जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हम लोग फेस कर रहे हैं वो ये है कि उनके दिमाग में सब कुछ है, बस एलिमेंट्स नहीं है, क्रिएटिव एलिमेंट्स नहीं है. आपको ऑब्जर्वेशन स्टूडेंट्स करना पड़ेगा. यू नीड टू ऑब्जर्व. यहाँ पे अगर इन्होंने 8 बॉक्सेस बनाए, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो किसी भी बॉक्स में 2 चीजें सेम नहीं है, सारी बॉक्स में चीजें अलग अलग हैं. इतना माइन्यूटली काम करना पड़ता है. अगर आपको कुछ भी बनाना है तो यू नीड टू वर्क माइन्यूटली.
मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप ड्राइंग देखो। मैंने अभी इससे पहले अशिता 4 और सेशन किए हैं, और आपने भी देखा भाविका का ड्राइंग में काफी बार शेयर करता था, सुयश का ड्राइंग में काफी बार शेयर करता था। मैं करता था, इसलिए करता था क्योंकि उनके लाइन क्वालिटी बहुत स्ट्रांग थी, और अब मैं अब आपका इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि आपके एलिमेंट्स आउटस्टैंडिंग होते हैं। किसी की लाइन क्वालिटी अच्छी होती है, किसी का एलिमेंट्स अच्छा होता है, और एलिमेंट्स में आपसे आगे कोई नहीं था डिजाइन सर्कल में। राइट, सो ये क्वेश्चन क्या था? कैन यू प्लीज एक्सप्लेन व्हाट वाज दिस क्वेश्चन? So this was like my practice question. This was one of the irritating question I had. So it was like book fair, book stall आपको दिखाना है. Then I thought, what can I make in a bookstall? So this was like this one such question. I could not make it very well, but still I kept it because this was like my base. If I can add something, if I remember something, I can add it here. So this was like books are kept on the stall. One person is typing. If you want to buy, you can buy it from there. The person will give you a receipt and everything. The other person is just keeping a watch, and the third person is looking at the books with a backpack. ये देखो, यहाँ पे इन्होंने बंगला में लिखा है, ये भी ऑब्जर्वेशन है। अगर आपको ऐसा कोई थर्ड लैंग्वेज आता है और आप अपने किसी लैंग्वेज में पोस्टर बना देते हो उससे, तो एक्स्ट्रा एलिमेंट ही काउंट होता है। यू कैन ऑलवेज डू समथिंग लाइक दिस। तो सारे सारे क्वेश्चन के सारे ड्राइंग में आप देखोगे तो वन थिंग इज कॉमन, इज एलिमेंट्स, अ लॉट एंड लॉट ऑफ एलिमेंट्स। जस्ट लुक एट दिस परफेक्शन। ये एंड होते होते आपका काम हो चुका था, जब आप ऑलमोस्ट परफेक्शन के टुवर्ड्स आ गए थे और आपको फुल मार्क्स मिलने लगे थे। दिस इज द ticket for the Statue of Unity. Yes, sir. Ticket for Statue of Unity, and you can see the डिटेलिंग। 2 टिकट दिया गया। आप खुद एक्सप्लेन करो अशिता कि इसको बनाने के पहले आपने क्या सोचा था। देखो, जैसा अशिता ने बोला कि वो पहला छोटा सा थंबनेल बना लेती थी, थंबनेल भी दिख रहा है यहाँ पे, सारे थंबनेल्स के अंदर है। तो अशिता आप बताओ क्या क्या सोचे थे इसको बनाने के पहले, और क्या क्या थॉट आया था इसको बनाने के पहले? So because आपने बोला था टिकट बनाने के लिए मैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लिए, so I could not just make a ticket. So I thought कि I should add a hand, the ticket counter, the whole from the person is taking from it. And also I thought that if Statue of Unity is in Gujarat, Gujarat tourism logo should be there. It's a must. So and also the tagline Khushbu Gujarat ki. So I added that. And also those ticket numbers that we have, I mentioned it. And also the Barcode, the you know the barcode is the continuation of the base. yeah, so I just made it like pedestal type का हो जाएगा थोड़ा. And also I thought adding the Indian logo also is a must because it was like the highlight of the year when the Statue of Unity was unveiled. So I thought I should add a chakra over there. तो And also, so I guess ऑलराइट, सो मैं अभी सबको यही बोल रहा हूँ कि करते करते, प्रैक्टिस करते करते, अशिता hasn't started from this. She has reached to this. All of you have to understand that she has reached to this by practicing and practicing. She has not started with this quality. She has started with the same quality you are doing the work, but she has reached to this quality because she was practicing a lot. Whatever assignments we used to give, whatever papers we used to give, whatever questions came to in front of you, she used to do all these things. But in all the things we have seen the presentation and the elements that is outstanding in all your works. How, अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो आप 3 फॉन्ट्स को बार बार यूज करते थे, तो फॉन्ट्स के लिए आप क्या किए थे? so my strong point is that I cannot make stylized fonts like other student my batchmates they used to make it. So I tried to copy it, but इसमें कर नहीं पाई sir. Because it was quite difficult for me. So I thought like I should not waste a lot of time on fonts, but the font that I am using, I will make it very neat so that it looks attractive. So it won't, it won't be something that my marks would be deducted somewhere. So I did the fonts like this. I practiced a lot. Sketch lines of the fonts. I used to write my letters between those lines till the time it became okay, perfect. Now that I can use it. All of you who are struggling with font, I have told 100 times that fonts are important. अगर इन्होंने बुक बनाया है तो खादी इन इंडिया ऐसा नहीं लग रहा है कि हाथ से लिखा है, ये लग रहा है कि ये एक फॉन्ट है। बहुत जरूरी नहीं है कि परफेक्ट फॉन्ट हो, किसी भी चीज में अगर आप देखोगे तो परफेक्ट फॉन्ट नहीं है, बट शी हैज गिवन हर बेस्ट।
एक ही चीज में अगर देखेंगे, इस वाले आर्ट में हम देखेंगे तो इस सेक्शन में 3 अलग अलग तरीके का फॉन्ट यूज किया गया अलग अलग तरीके से करने के लिए। अब ये वाला क्वेश्चन आई थिंक ये क्या था, डट उसके लिए था ना, स्किन केयर के लिए एडवर्टीजमेंट बनाना था, राइट? Yes, a dermatology center has been opened. So, sir, yes, sir. तो ये देखो, अब इस प्रेजेंटेशन को आप लोग ध्यान से देखो कि इन्होंने, मेरे 80% लोगों ने, मुझे याद है कि 80 नहीं 90% लोगों ने सिर्फ ये ड्राइंग बनाई थी। बिकॉज मुझे अच्छे से याद है क्योंकि मैं सारे क्वेश्चन खुद चेक करता हूँ। मुझे बहुत अच्छे से याद है कि इन्होंने बनाया था, जिसमें कि इन्होंने दिखाया कि किसी कोई यहाँ पे जो फोन नंबर है ना उसको नोट भी कर रहा है, फोन पे उसको नोट भी कर रहा है। सो दीज फॉर यू दिस इज अ स्मॉल थिंग, for anyone else it can be a small thing, but the person who is checking a paper, for him, for her, it is one thing which is about how you have observed the thing, कितना रियल लाइफ चीज बन रहा है। जब भी आप कोई चीज सोचते थे अशिता, जब भी आप कोई आर्ट वर्क सोचते थे तो कितना इंपॉर्टेंट था आपके लिए कि आप उसको रियल लाइफ सोचते थे, या फिर आपको पोस्टर बोला जाता था तो पहले आप पोस्टर सोचते थे, या उसको प्रेजेंट कैसे करना है ये सोचते थे? सर आई थिंक मैं सबसे पहले ही सोची थी कि पोस्टर बनेगा कैसे, क्या क्या होना चाहिए। टिल द टाइम आई एम श्योर कि ये सारी चीजें होंगी, इट्स अ मस्ट होंगी। फिर उसके बाद आई यूज्ड टू थिंक कि हाँ, अब मैं इसकी प्रेजेंटेशन पे डिसाइड कर सकती हूँ किस तरह प्रेजेंट करेंगे तो अच्छा लगेगा। सो इट विल सो माय फर्स्ट थिंग वाज कि इंटरैक्टिव होना चाहिए। अगर इफ आई एम थिंकिंग ऑफ प्रेजेंटेशन, इट शुड लुक इंटरैक्टिव, इट शुड फील लाइक कि आपने देखा, आपको अच्छा लगा, सो आप कॉल कर रहे हैं। सो यही था सर। बट सर फर्स्ट थिंग वाज लाइक आपको श्योर होना पड़ेगा आपको क्या क्या चाहिए। योर फर्स्ट बेसिक थिंग इज यू बी श्योर ऑफ दिस what the question is, then you think about the presentation if you can do it well. The most important thing first of all is that क्वेश्चन को तो नहीं छोड़ना है। क्वेश्चन पोस्टर में अगर खादी है तो खादी बनाओ। सेकंड थिंग व्हाट यू यूज टू थिंक इज हाउ टू प्रेजेंट इट, राइट? Yes, पहले sir. आप हमेशा सोचते थे एग्जाम पास कैसे करें, और दूसरा सोचते थे कि रैंक कैसे लाएं। Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. True लोग that. को a lot of students what they fail at is that their presentation पे पूरा दिमाग लगा देते हैं और अंत में टाइम नहीं बचता आर्ट करने के लिए। तो आर्ट तो करना ही करना है, लेकिन थिंकिंग में सबसे पहले आर्ट सोचो कि बनाना क्या है, एंड देन प्रेजेंटेशन। आप हर चीज में देखोगे तो लॉट ऑफ कलर कॉम्बिनेशन। अगर मैं यहीं पे अब चारों ड्राइंग को अगर देखूं यहाँ के अंदर, तो मैं चारों ड्राइंग में एक चीज कॉमन पाऊंगा कि सारे पॉजिटिव कलर्स हैं। यहाँ पे हर ड्राइंग में ब्रीदिंग स्पेस है, और हर ड्राइंग के प्रेजेंटेशन में कुछ ना कुछ नया है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी भी मेरे मुंह से यही निकलने वाला था, गुड वर्क अशित, तब तो अच्छा हो ही गया। अभी भी Thank you गुड so much, वर्क sir. ही निकलने वाला था। ऑलराइट, सो यू सी ऑल द थिंग्स। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये ड्राइंग है जो कोई भी कर सकते हो, लेकिन ये ड्राइंग कोई भी नहीं कर पाते हो क्योंकि आपका थिंकिंग प्रोसेस में आप अटक जाते हो। तो फिर से बोल रहा हूँ सब लोग को कि आप लोग इन टॉप रैंकर्स लोग से इंस्पिरेशन लो कि टॉप रैंकिंग लाने के लिए ना आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं, अपने प्रेजेंटेशन, अपने क्रिएटिव थिंकिंग और अपने आउटपुट में आपको बेहतर होना पड़ता है। सेकेंडली, कोई भी एक चीज अगर वीक है तो उसको लेकर रोना नहीं है, बाकी चीजों को स्ट्रॉन्ग करना और वीक चीज को डेफिनेटली इंप्रूव करना है, कोई डाउट नहीं है इसमें, राइट? सो आई कैन सी ऑल द थिंग्स, इट्स वेरी गुड, ऑल दी प्रेजेंटेशन। अब यहाँ पे स्टैम्प था, कितनी बार अभी तो मैंने बहुत लोग, आप लोग सबको स्टैम्प के क्वेश्चन दे दिए, लेकिन देखो यहाँ पे स्टैम्प है और यहाँ पे स्टैम्प लगा रही है पोस्ट कार्ड पे। इट्स वेरी सिंपल बट वेरी, यही चाहिए एग्जामिनर को, निफ्ट को यही चाहिए कि स्टैम्प भी दिखे और प्रेजेंटेशन भी कितना स्ट्रांग हो। अब इसमें कुछ एक्सप्लेन करने का नहीं, मतलब इसमें अशिता एक्सप्लेन नहीं कर सकती है कि आपने क्यों सोचा। अब मैं अगर सब चीज, अगर मैं अब आपके अशिता, अगर मैं फिर से रिवाइंड करूं तो आई कैन सी हैंड्स हियर ऑल्सो, फिर आई कैन सी हैंड्स हियर ऑल्सो इस ड्राइंग में भी, जिसमें, और मैं यहाँ इन दोनों जगह भी हैंड देख रहा हूँ। आप हैंड्स का यूज करते थे, आपको पता है आप हैंड का यूज करते थे, लेकिन जब कोई पेपर चेक करेगा उसके लिए तो पहली बार ही होता था कि देखो हैंड का यूज हो रखा है। तो प्रेजेंटेशन में बहुत डिफरेंस नहीं आता था, लेकिन आप एक चीज को करते करते एकदम परफेक्ट हो गया था। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ योर ड्राइंग जिसमें हैंड्स होते थे और आप उसमें परफेक्ट थे। सो यू कैन सी ऑल दीज थिंग्स। सो मैं तो काम दिखा ही रहा हूँ। बेसिक मिस्टेक जो आप करते थे और आप लोगों को बोलोगे कि वो मिस्टेक मत करो, ऐसा क्या मिस्टेक है जो आप बहुत करते थे और आपको लगता है कि वो मैं और बेटर कर सकती थी? So, I think from the last year, my experience is do not procrastinate. Do not put your work for tomorrow.
do it today, do it now. Actually, this is the first mistake that I did. I regretted it and I had to do it, repeat another year. Don't do it. And so, and also, if I have to point out mistakes, do not waste your time. If you know कि नहीं हो रहा है उसमें ज्यादा वेस्ट मत करो. You move on to things, move on to other things. Because अगर आप उसमें इतना टाइम वेस्ट कर दोगे ना, you won't have much time left to do another thing. So this is really important. And also, so I don't think I have much more to say because I think this is very different for everyone. ये मेरे लिए था. और आपका, अगर मैं आपका बोलूं कि आपका सबसे बड़ा स्ट्रेंथ गैट और कैट मिला के क्या था जो कि एग्जाम में भी आप फॉलो किए और सक्सीड किए? व्हाट वाज योर स्ट्रेंथ? So if I have to talk collectively about GAT, I think so English and maths were the biggest strength. I was quick in maths for calculation and also English. Reasoning was also, it got better with time. It got better with time. But yes, sir, it was my main focus was there. Since GK is like quite vast, so I know because I know I don't know everything in GK, but then I left GK to some space I cannot do if then I leave it. And then CAT, कैट तो हम लोगों ने सबने देख लिया, कैट के लिए मैं और yes, sir. नहीं लूंगा, लेकिन जीएटी सेक्शन में व्हाट वाज योर स्ट्रेटजी फॉर जीके? GK, sir, sorry, the current affairs that you gave us, sir, I think that is a must. Every student should learn it because you never know. उसमें से कुछ भी आ सकता है and I'm 100% sure उसमें से कुछ ना कुछ तो आएगा, sir. And then also, if you want to do GK on your own, so you can also refer to the sites, but your current affairs were a must for me. So it had to be done. The moment you give it, I used to learn it that moment only. जीके के लिए एक्स्ट्रा सोर्सेस क्या, आप जो एक्स्ट्रा रिसोर्सेस क्या यूज करते थे अपार्ट फ्रॉम द नोट्स यू यूज्ड टू गिव? So Jagran and Josh, I used to look for the current affairs from that जागरण site, and जोश, right? also GK Today. GK Today was also a site where I used to do it. It was an IS site, so I used to do GK from those two sites, not more than that. All right. And apart from the English notes we used to give, apart from handouts, what extra thing you were doing in English? So I used a lot of books that is read in Martin. I used those books and also. आप बुक्स बता दो, क्या क्या बुक्स आप एक्स्ट्रा किए हो इंग्लिश के लिए? So I used only Ren and Martin. To be honest, I used Ren and Martin only and used to take out a lot of printouts available on the internet. So those PDFs about if I have to practice my preposition conjunctions and also comprehensive passages, I used to take out from the internet. I do not know the sites for the comprehensive passages, but it was Interview Mania as far as I remember. Interview Mania में बहुत सारे comprehensive passages हैं and those are quite also tough. So I used to take out printouts from there from that site and used to do it. Any help from newspaper? Newspaper. So I used to read newspaper for 30 minutes, but then it was like नहीं अब इसमें से कुछ नहीं मिलने वाला मुझे, मैं यही पढ़ लेती हूँ. ठीक है. So logical reasoning तो वैसे easy होता है, लेकिन in the GAT section, what you find the toughest? English, GK, logical or maths? The GK, it has to be GK because GK इतना vast है, you cannot cover everything. So it would always feel like आपने कुछ miss कर ही दिया इसमें से. So GK was very tough. So I made sure कि मेरा focus इन तीनों पे हो गया है. So ये तीनों अगर better हो जाएंगे, so I can somewhere handle G. You were almost A in every topic, maths, English, logic, GK. आप CAT में थोड़ा कम भी नंबर ले आते थे, GAT में एक्स्ट्रा मार्क्स ला के आप उसको मेंटेन कर लेते थे. GAT में यू नेवर स्कोर्ड, आई थिंक आप हमेशा फर्स्ट या सेकंड या थर्ड ही रहे हो GAT सेक्शन में. सो कभी ऐसा हुआ आपके साथ कि CAT सेक्शन नहीं अच्छा हुआ और उसका प्रेशर GAT के ऊपर पड़ गया, या वाइस वर्सा हुआ? और अगर ऐसा हुआ Yes, तो sir. उसको ओवरकम कैसे करें? So ये I think मेरा GAT में कभी प्रॉब्लम ऐसा हुआ नहीं, कभी CAT में हो जाता था. So then I used to feel disheartened because मुझे कहीं ना कहीं पता चल जाता था कि I am below the expectations.
because you have set expectations कि हाँ इतने से ऊपर होना चाहिए. So I think if I fall below that, अब लगता था थोड़ा disheartening लगता था, but then I used to focus नहीं, it's okay, ये हो गया, this is mock, I can give it again, I can give that cat section again and show you personally कि फिर आपके reviews ले लूँ, फिर then उसके बाद फिर I'll work towards it. I used to at least attempt your cat papers twice. Every cat paper has been attempted twice so that I can improve. If I have to add something here, I can improve. So I used to do it so. I also suggest everyone that once you have given the CAT paper, you have scored 60, 65, give it again and make sure that you are scoring 80, because now you know your marks and now you have seen other papers that how others have scored. So it is very important to take inspiration from other students who are doing better and not taking it like a competition, but always taking inspiration from the others who are doing better than. Anyone has any question, you can always raise your hands now. All right, so we are in the last leg of our 15 minutes with Ashita. Ashita, you are going for textile designs. You have got rank 20. You would have got anything: fashion communication, fashion design, product design, NIFT Delhi, anything. But you have specifically gone for textile design. Though I like textile design because I am also textile designer. So will be my junior now. But why textile design? क्या सोचे थे? And how you have compared with other courses? So to be honest, NIFT provides really good courses, everything. But I think for textile design, it is somewhere like I personally feel attached to. Because if I see prints that are very beautiful in, every part of India, that you can see different type of prints. Everything is different. You go anywhere. So it just feels so nice. I don't know why. I just love prints so much. So it is like, बड़ा अच्छा लग रहा है इसको दोबारा, मतलब like I used to see prints and I used to make it. So it feels good. So I don't know the reason why I chose it, but it was just my guts told me that let's take it. Let's take I textile was also design. quite surprised. In last 3 years, I have not seen anyone who have scored up to rank 50 and taken textile as the first option. In my time, textile used to be like rank 1 and rank 10 used to take textile, because textile अलग ही एक charm है textile का. There is so much of weaving, so much of prints, but textile is a very hard working career option. But why not communication? This question a lot of students have asked me, ask you that why you have not opted for communication, because every student nowadays, if they're scoring or not scoring, they want to go for fashion communication. Why you are rejecting fashion communication? So fashion communication, to be honest, बहुत कुछ है fashion communication. It is photography, marketing, everything is there. But so, to be honest, if I see myself in that field, I feel good. I felt every time, I thought that I was also conflicted that fashion communication ले लेना चाहिए. Most of my friends who got into NIFT last year, they also took, one also took fashion communication. She is in NIFT Mumbai. So I was like, नहीं यार, मेरे लिए ठीक नहीं है. I don't feel attached to communication. So where do I you see feel yourself after 4-5 years? What you want to do in textiles? So that question about seeing myself after 5 years, I haven't actually thought of it. I just feel like I have to go with the flow. I see what works best for me. All right, I haven't actually thought. you have opted for the most toughest department in NIFT. Textile is the Okay. toughest thing. We don't see textile people out in the NIFT and NID campus. Textile people are always in their labs and their looms. So NID and NIFT, the toughest course to pass is textile, because you are doing actually 5-6 courses together. You are doing fashion, you are doing prints, you are doing textile, you are doing weaving, you are doing surface. Along with that, you are doing marketing and photography and styling. So there are so many things to do in textile. But That's yes, a lot good of work. choice. At the end of the day, good choice. We have to be a topper there also. All right, Ashita. Right. Anyone has any questions, just raise your hand or open your mic, you can ask her. Yes, Kainat? Hi, congratulations. Thank My you. question is, how did you not get demotivated in the sense you must have seen so many people around you that do so much better than you. I feel sometimes competition is a very big, it bogs you down. How did you not get affected? What you're saying is true, but the thing is, at the end of the day, I am not competing with those students. I have to compete with myself. If I scored this much, I need to make sure that I do much better than yesterday. The thing is, ये होगा. आपको लग रहा होगा कि आपका काम इतना अच्छा नहीं है उनके
उनसे अगर compare करेंगे, but the thing is there is a lot of room for improvement. You can always draw inspiration. चलो इन्होंने अगर कर दिया, I can also do it. It's just that I haven't observed much, or maybe आपने किया नहीं होगा, so you can also draw inspiration from it and put it in your work. So that is more important. Do not feel disheartened because कि अगर उनका अच्छा है मेरा अच्छा नहीं है. Do not compare yourself, please. That is for sure. So I want to tell each and every one of you, Ashita is the most motivated girl of 2022-23. Most motivated. Only girl who has attended each and everything, each and every feedback session, given each and every examination, and definitely she has performed and improved in each and every examination. And trust me, she has started with 40 on 100 and she has reached to 85 on 100. And there were discussion going on in design circle among all the teachers that Ashita rank 1 to 10 लाएगी, rank 1 लाएगी, rank 1 to 20 लाएगी, because every one of us knew that this is the most consistent girl in design circle. बाकी सब में मैंने जितनों के भी साथ सेशन किया वो up down होते थे, but she was consistent. So I think consistent is the word she has followed. और demotivation तो इनके दूर दूर तक नहीं था. 100% I know it. Another thing, do you feel that, like, sometimes I feel like I don't have enough time and there are so many things with school and design circle. Do you think that, like, I sometimes contemplate if I have enough time and if it's worth trying, because I also give the GAT and the CAT, but I see myself not doing well, and then I don't know, like, I don't know where to go almost. How did you tackle those problems? Let me tell you, I am in DCAC. I was Delhi College of Arts and Commerce. I was doing my college and design circle side by side. So my my semester exams were also there. I had to do it. Same problem hai, but then the thing is, what drove me here is that I cannot see myself in another field. To be honest, मेरा ये था कि I cannot see myself in another field. It was like अब मुझे करना ही है. So time निकल आएगा. Honestly speaking, if you feel, I used to pump up myself every day कि हाँ हो जाएगा, अब तो करके ही रहूंगी. So time निकल आता था. I used to divide my time very systematically. कि आज छुट्टी मिली तो मैं ये कर लेती हूँ. इस तरह you can do it. I think if I could do it, you can also do it. So होगा आपके सारे 12th के practicals वगैरह सब चीज हो रहे होंगे, but you will be able to do it. Honestly, कर लोगे आप. Thank you. फोन को छोड़ देना, सब तो निकल आएगा टाइम. Anyways, anyone has any other questions? Just raise your hand. Anyone has any other question? कल को निफ्ट दिल्ली जाओगे, यही रैगिंग करने वाली हैं आपकी. इसलिए yes, Vanya, please ask. Do you have, first of all, congratulations. Do you have any tips for improving mental math? I'm sorry, I could not hear your Do you have question. any tips to improve the mental maths? Mental maths. Mental maths. So honestly, that's where I don't want to go. But when I was young, I got into Abacus Academy. So that where I used to calculate way faster than everyone. So I used to practice a lot. Mental maths improve करने के लिए you practice a lot. The more you practice, the more quick you will become. So there's no tips and tricks. Just practice a lot. I'll still suggest all of you that still focus on English, GK, because these two topics in NIFT will comprise of 65 marks. 65 marks is a lot of marks. If you get around 50-55 out of this 65, your journey is already becoming smooth. So please, maths एक सॉल्व करने में अगर बहुत फास्ट हो तो भी 1 to 1.5 मिनट्स लगेगा, लेकिन इंग्लिश एंड जीके कैन बी सॉल्व्ड इन 10, 20, 30 सेकंड्स. तो प्लीज इन दोनों पे फोकस करो. और जिसका मैथ्स वीक है वो प्लीज मत सोचो कि बिना मैथ्स के कुछ नहीं हो सकता है. बाकी टॉपिक्स पे फोकस करिए. लेकिन अनफॉर्चुनेटली आई सी अ लॉट ऑफ यू आर नॉट परफॉर्मिंग इवन इन इंग्लिश. सो प्लीज परफॉर्म इन इंग्लिश. Anyone has any other questions? Can you please suggest some ways like in which we can stay motivated and be continuous in our work instead of getting distracted? Forget mobile phone. Do not procrastinate. My only two thing. And also, if you are taking
if you really want to go to NIFT or NIED, you start imagining yourself as a student. I used to always imagine, okay, I will have a badge, I will have an I-card that will have NIFT's logo. How will it feel? Honestly, ये मेरा था कि सोचने में ही इतना अच्छा लग रहा था. The moment I will do it, so और कितना अच्छा लगेगा. So my aim was that allotment paper. So I took the printout, and I have, actually kept it somewhere very safe with me. So it is like my achievement. Every time I feel demotivated, I look at, हाँ कर दिया मैंने, कर दिया. ये है मेरा, ये this is my achievement, this is my reward. Thank you. रिवॉर्ड के लिए बहुत चीज होता है, बट ऑल आई थिंक दैट कितना भी मोटिवेटेड हो जाओ किसी चीज को देख के कि मुझे जाना है, सो आई थिंक मोर देन ड्रीमिंग इट शुड बी एम व्हाट यू हैव गॉन फॉर अशिता. सो आप Yes, sir. आई एम श्योर आप ये एक्टिविटी महीने में एक बार करते होगे, बट आप उस एम के फोकस के लिए आप आई हैव सीन यू that you have not missed any assignments, not even one assignment you have missed. You have submitted each and every assignment, and कभी कभी असाइनमेंट आप एक महीने बाद सबमिट करते थे लेकिन करते थे. द इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट आप एक बात बहुत ऑनेस्टली बताना कि जितने क्वेश्चन हमने दिए आपको निफ्ट में कभी लगा कि उससे बाहर कोई क्वेश्चन आया? No, sir, to be honest, मुझे लगा कि यार ये तो सेम ही क्वेश्चन है, बट ओके, आपने यहाँ पे कुछ और मांगा तो उन्होंने भी यही मतलब मांग दिया, बट दिस इज लाइक सेम ही है. मुझे लगा कि आई प्रैक्टिस अ लॉट, सो आई फाउंड दोस क्वेश्चन प्रीटी इजी. वो इसलिए लगता Yes, था sir. क्वेश्चन सेम नहीं था. मैंने भी चारों सेशन किए और चारों में स्टूडेंट ने सेम चीज बोला कि ऑलमोस्ट क्वेश्चन सेम था. बात क्वेश्चन सेम नहीं था, एक बार भी एक भी क्वेश्चन सेम नहीं आया था, लेकिन उसके जैसा इतनी बार आप प्रिपरेशन कर लिए थे कि आपको लगता था कि इससे टफ क्वेश्चन तो मैं इंस्टीट्यूट में कर चुकी हूँ एक बार प्रैक्टिस, और वो Yes, sir. कितना भी बुरा प्रैक्टिस हो वो इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है प्रैक्टिस करना. एनीवेज, नंदिनी, योर क्वेश्चन प्लीज. Hi, congratulations. And this is more like a personal question. मतलब अभी तक I don't think anyone has talked about this. Do you think that company matters? मतलब ऐसा है कि social media delete कर दे, or did you actually have a study group? या फिर बात छोड़ दी friends से? Because I don't get it. Social media delete कर दो, friends से बात छोड़ दो. Like I just want to know. To be honest, I get your point. I get your point. मैंने भी कोई सोशल मीडिया डिलीट नहीं किया था, बट आई जस्ट कंट्रोल माई सेल्फ. कोई नहीं, अगर I was wasting my time half an hour, 45 minutes on social media, I can reduce this. I can cut it down. 15 मिनट चल जाएगा, कुछ नहीं होने वाला, दुनिया खत्म नहीं हो जाएगी. एंड रही बात फ्रेंड्स की, फ्रेंड्स इज लाइक, if you tell them your story कि क्या मुझे करना है, so they will also motivate you. You know, your company is also, that is also important कि if you have good friends, they will always push you कि you do it. Even my friends for a year, the way we used to chat, my chat died down. You know, we have a private chat. Ashita, you're doing good. You're doing good. Thumbs up. That's it. Finished. After 1 month, we'll chat again. That will be, again, things will be repeated like this. Then, okay. Now that I've done it, now I've got reconnected back to my friends. Okay, what all I have missed during the year. Yes. What I feel, Nandini, that it's a very genuine question. सब लोग यही बोलते हैं, स्कूल में भी प्रिंसिपल वही बोलते हैं, घर में भी बोलते हैं, इनफैक्ट हम लोग भी बोलते हैं सोशल मीडिया डिलीट करना ऑप्शन नहीं है, सोशल मीडिया होना चाहिए. सोशल मीडिया से आप इंस्पायर भी होते हो, और सोशल मीडिया सही वे में यूज करो तो इतने सारे आर्टिस्ट है, इतना सारा उनका काम है. मैं बोलता हूँ सोशल मीडिया में सिर्फ उनको फॉलो करो ना जो आपके ड्रीम को अचीव करने में हेल्प करे. फॉलो योर बेस्ट आर्टिस्ट, फॉलो योर बेस्ट आर्किटेक्ट्स, फॉलो द बेस्ट ग्राफिक डिजाइनर्स. उनके काम को देख के भी इंस्पिरेशन होता है, और यकीन मानो आपको आइडियाज आ जाते हैं, क्योंकि आपको आदत है सोशल मीडिया जो देखते हो ना वो दिमाग में रह जाता है, और जो हम न्यूज़पेपर में देखते हैं या फिर अपने बुक में देखते हैं वो दिमाग में नहीं रिटेन होता है. तो फिर से बोल रहा हूँ, आप सोशल मीडिया पे रहो लेकिन उन लोग को फॉलो करो ना जो आपके मतलब के, जो आपके काम पे. अपने दोस्तों के फोटो को लाइक करके कुछ नहीं मिलना है अभी, और यकीन मानो आपका सिलेक्शन नहीं होगा ना तो सबसे पहले आपके फ्रेंड्स ही खुश होते हैं, क्योंकि द फ्रेंड्स आर दी वन जो आपके सक्सेस होने पे शायद उतना खुश नहीं हो जितना अनसक्सेसफुल होने पे होते हैं. मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप अपने सारे दोस्तों को इनफैक्ट बोलो सब लोग कि इट्स टाइम टू स्टडी. सब लोग अपने अपने ड्रीम कॉलेज पहुंच जाएंगे, फिर एक साथ गोवा का ट्रिप मारेंगे सब लोग अपने अपने कॉलेज पहुंच के. फिर से बोल रहा हूँ कि फ्रेंड्स आर इंपॉर्टेंट, सोशल मीडिया इज इंपॉर्टेंट, बट इंपॉर्टेंट इज दैट हाउ यू आर डेडिकेटेड द टाइम, एंड डोंट बी अवेलेबल एवरी टाइम फॉर एवरीवन. अब हमेशा सबके लिए अवेलेबल नहीं हो. सबको पता होना चाहिए ना कि अनन्या 6 से 6:30 ही अवेलेबल है व्हाट्सएप के ऊपर.
आनवी सिर्फ 7 से 7:15 अवेलेबल है, क्योंकि आप दिन भर अवेलेबल हो ना, तो आपको दिन भर व्हाट्सअप करते हैं, तो आपको लगता है रिप्लाई नहीं करेंगे तो दोस्त बुरा मान जाएंगे। दोस्त को कोई फर्क नहीं पड़ना, रिप्लाई आप करना बंद कर दो। आप एक दिन डिसाइड कर लो कि जितना मैसेज आएगा ना व्हाट्सअप ऑन करेंगे और 6 to 6:30 सबको रिप्लाई करके व्हाट्सअप बंद कर देंगे। लोग को अपने आप पता चल जाएगा और उसी टाइम पे मैसेज करना शुरू कर देंगे। बट deleting the social media apps and removing trends from your life is not a solution. No one should do it. Please don't even think of doing that. Yes, Krishna, you have a question? First of all, congratulations. My question was like, what was one thing that you wish you started before? And then how did you balance your college life or school life with coaching? Because, you know, sometimes it gets quite a lot, like with all the work and all. You know, equally, I did not go to college. Okay, you required 65%. I did not go to college at all. At all. I used to, get all the material that what has been taught through my college friends, but my major time, to be honest, was spent at design circle. I had to, do it. So mainly, इतना मुश्किल नहीं था. Honestly speaking, mainly इतना मुश्किल नहीं था to balance things. I did not take the coaching in class 12th. I had contacted sir, but I chose not to do it because I thought कि मैं कर नहीं पाऊंगी. इसलिए so I cannot possibly give you the answer because मेरे लिए थोड़ा easy था because I did not actually go to college because मेरा time वहाँ पे काफी चला जाएगा. So I spent a lot of time at home doing my work here on the CAT and the CAT section. But Krishna, what I suggest that start making, every one of you start making your timetable. Since you are a lot of you are in class 12th, a lot of you are in class 11th. Without making timetable, you won't be able to do it. बट मोबाइल में अलार्म मत सेट करो। मोबाइल के किसी भी नोटिफिकेशन को हम सीरियसली नहीं लेते हैं। अपने पेपर और पेन पे भरोसा रखो, टाइम टेबल बनाओ। टाइम टेबल बना लोगे ना, 1 साल सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। यू विल टेक आउट टाइम फॉर एवरीथिंग, फूड, फन, मूवीज, स्टडीज, एक्स्ट्रा को करिकुलर, यू विल फाइंड टाइम फॉर एवरीथिंग एंड फॉर गुड। बट आपको सोने के लिए भी 6-7 घंटे मिल जाएंगे। बट विदाउट टाइम टेबल होता क्या है कि आपने सोचा नहीं था, प्लान नहीं था कि आज फ्रेंड से मिलना, और आप फ्रेंड से मिल लिए, अब वो 2 घंटा वेस्ट हुआ। अब आप क्या करते हो कि रात में 2 घंटा मैनेज करते हो एक्स्ट्रा पढ़ाई करके, और फिर लेट सोते हो, लेट उठते हो, और अगले दिन का फिर टाइम टेबल खराब हो जाता है। तो प्लीज एवरीवन स्ट्रिक्टली फॉलो योर टाइम टेबल। निफ्ट एंड आईडी एग्जाम इतना टफ नहीं होता, बहुत ईजी एग्जाम होता है, बिल्कुल आईटी की तरह एग्जाम नहीं है। एनीवन हैज एनी अदर क्वेश्चन? So I think we are done. Thank you so much, Ashita, for taking our time, and congratulations for the new journey. It's starting from 26 July. 26 जुलाई के बाद से आपको सोने खाने पीने का कोई टाइम नहीं मिलेगा, तो जितना आराम करना है भी कर लो, उसके बाद जिंदगी बदलने वाली है। ठीक है, चलो, once again congratulations and thank you so much everyone for joining us today. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you so much, sir. Thank you, Ashita. Thank you.